Hi, hello, this is your Lucky Sir. I'm back with 2022 JE main series. Fourth exam, this is 25th June second shift. Chemistry paper. When you compare with the first three papers, this paper is little good. So first question is, threshold frequency of metal is 1.4 10 to the power of 15 per second is given. Frequency is given, threshold frequency, and he is asking the minimum amount of energy required. The minimum amount of energy required itself is threshold frequency. So he is simply asking E is equal to h nu फार्मूला. बस इसमें वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा. इंटू फ्रीक्वेंसी इज गिवन 1.4 10 to the power of 15 per second. सीधा सीधा क्वेश्चन है. यू कैन क्लासीफाई दिस एज ईजी क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. बहुत ही आसान से क्वेश्चन है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों का मतलब सेम होता है. देन एन आइडियल गैस ए इज प्रेजेंट in a closed rigid container at 27 degree Celsius. States of matter question. Chemistry में कभी भी डिग्री सेल्सियस में है तो यू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन. नो प्रेशर, नो टेंशन. ओके, एंड ये 45 डिग्रीज में है, सो दिस विल बिकम 318 केल्विन. Two temperatures are given. He is asking about pressure. So the law is P1 by T1 is equals to P2 by T2. A very simple basic pressure temperature law. States of matter का क्वेश्चन है. डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, यू विल गेट द आंसर. प्रेशर 38 by temperature is given 300. Second pressure you need to find out by 318. So pressure is directly proportional temperature, so इसका वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही आएगा, more than 38, and you are getting here approximately 40. 0.1 molar 10 ml of an acid A neutralize completely 0.05 molar 20 ml base. इसको सॉल्व करने के लिए this is the best method. Okay ना, let base of acid is X, then A plus MOH taken twice gives us salt and water. At complete neutralization, milli equivalents of acid is equals to milli equivalents of base. ये सीधा सीधा प्रिंसिपल है. So n into 0.1 into 10 is equal to 2 into 0.05 into 20. So आप सीधा कर सकते हो. नहीं तो एक और भी आसान सा सवाल है, और भी आसान सा मेथड है. 0.05 मोलर MOH टेकन ट्वाइस है ना, यहाँ पे टेकन ट्वाइस है, इसीलिए इसको डबल कर दो. 0.1 नॉर्मलिटी. ओके, इसको किस नंबर से फाइंड करें तो आता है, दैट वी आर गोइंग टू डू. दिस इज 0.1 नॉर्मलिटी एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड ओनली. दैट इज आवर पॉइंट. एंड यू सी दिस इज 10 ml and this is 20 ml. If this is 20 ml and this is 10 ml means it should be 0.2, right? Then only n1 v1 is equals to n2 v2. ये थोड़ा लॉजिक वाला है. ओके ना, जस्ट लॉजिक. यू सी I said for base this is 0.1 and 20 is equal to volume दिया है 10, so n1 must be 0.2 and molarity दिया है 0.1, so 0.1 से 0.2 आने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 2, दैट मीन्स इसका बेसिसिटी है 2. ये आप यूज़ कर सकते हो फार्मूला. आर द बेस्ट ईजिएस्ट मेथड इज फर्स्ट MOH टेकन ट्वाइस है, इसलिए मोलारिटी को आप डबल कर दियो. ओके, यू मेड दिस डबल, देन 0.05 into 20, that is 0.05 now becomes 0.1. 0.1 into 20 is equal to, यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी है, यू आर चेकिंग विथ नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी आपका 0.2 आ गया. सो मोलारिटी दिया है 0.1, नॉर्मलिटी 0.2 है, तो विथ व्हाट फैक्टर यू आर मल्टीप्लाइंग, दैट इज नथिंग बट द बेसिसिटी. एंड द रूल इज फॉर एसिड्स नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी. दिस आई वॉज चेकिंग. सिंपल सा क्वेश्चन है. 7 grams of solute, molar mass is given, dissolves in 42 grams of water. If solute get dimerized in water and depression in freezing point is 20 degrees Celsius, then find percentage association of solute. थोड़ा सा little lengthy question है, but you can do it. Thank you resonance team. You see delta TF is equal to I into KF into M. You need to find out I. So delta TF is given here, the change is 20 degree Celsius is mentioned. ये memory based paper है बेटा, थोड़ा इधर उधर वैल्यूज हो गए तो डोंट थिंक. here 2.0 लेके गए, दैट मीन्स दिस इज 2.0. इतना नहीं बढ़ेगा, 20 नहीं बढ़ेगा, दिस इज 2.0. स्मॉल टाइपिंग मिस्टेक्स आर acceptable because we are in a hurry. So delta TF 2.0 is equal to 1.86, this is given. And molarity formula, you know, molarity is equal to mass by molar mass into 1000 by
mass of solvent. So that is substituted here. You can check these values. 7 into 1000 by 93 into 42. You are getting here 2.0 is equal to I into 3.33. So I is equal to, you are getting as 0.6. Okay. So ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा. Once if you get the calculation, alpha is equal to I minus 1 by n minus 1 for this is dissociation. Alpha is equal to 1 minus I by 1 minus 1 by n. This is for association. And here dimerization is mentioned. Dimerization is mentioned, so n is equal to, you need to take 2. And you need to find out alpha by taking I value. So अब देखो 2 is equal to I into 1.86 into 7 into 1000 by 93 into 42. You will get some value. Because here 2.0 is taken, here 3.3 is taken, here 0.6, some small mistake may be there. Just take this one, you will get the answer. इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में इसका आंसर बता के रहूँगा. अभी थोड़ी देर में I will give you this question separately. See, for a reaction, A gives rise to products at pressure of 55 kilopascals 340 seconds, 27.5 kilopascals at 170. So सीधा है ना, ये हाफ लाइफ जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो गया. देखो 55 किलो पास्कल्स पे 340 है, तो ये जब आधा कर दिए तो ये भी हो गए, आधा हो गया. ओके ना. व्हेन द प्रेशर इज मेड हाफ, द हाफ लाइफ आल्सो बिकेम हाफ. दैट मीन्स टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. व्हेन टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, द आंसर इज गोइंग टू बी 0. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियो में भी है. दैट मीन्स इन दिस 2022 सीरीज ओनली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 0, T of 1 by A second order, T of 1 by A square third order. Simple question. अगर डिपेंड ही नहीं करता है तो T of is proportional to A to the power 0, that is first order. Arrange the following in the increasing order of reduction potentials. ये थोड़ा मेमोरी टाइप हो गया. देखो यहाँ पे लिथियम दिया है. लिथियम इज रिडक्शन पोटेंशियल में मिनिमम वैल्यू रहता है. ओके, हियर द वैल्यूज आर मेंशन. ज़्यादा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लिथियम विल बी डेफिनेटली देयर इन दैट लिस्ट. लिथियम प्लस टू लिथियम, दिस विल बी द लीस्ट वन. सो लिथियम शुड बी द लीस्ट one, so C must be least. C is least in these two options. Then go with the remaining. C, D. C, D is also given. A is given highest. So the problem is with BE or EB. When BE and EB are there, they just check what is BE, what is B. E is with iodine and E is with silver. Iodine is a non-metal. Silver is a metal. The values are given here. You can check. And this is based on electrochemical series. Okay, electrochemical series means this question is from electrochemistry. Little memory based. I don't say completely memory, but little memory based only. आप reactivity series बोलते हो इसको. You call this as reactivity series, right? Coming to this one, for an ideal gas, increasing temperature by, this is little lengthy paper when you compare with the first three papers, so it is taking some time. Have patience to see all the questions because all questions are important here. For an ideal gas, on increasing temperature by 1 degree Celsius, the pressure increases by 0.04. Then find initial temperature in Kelvin, consider volume and amount of gas. That means he made volume and amount of gas constant, means he is taking the relation between P and T again. So P1 by T1 is equals to P2 by T2. Here is a question already there, and this is report your answer as x in 10 to the power of minus 2. Okay, x in 10 to the power of minus 2 is given. So you are checking with pressure P1 by T1 is equals to P2 by T2. This is the formula. And when you take this formula, first pressure, first temperature, okay na, second pressure 1.04 times, and this is because 1.04% increase na, 0.04, so it will become 0.04% increase, means for 100 0.04, so 1 it will be 1.04. so that we have taken here. Temperature is increased by 1 degree Celsius, so by substituting you will be getting here 4 in 10 to the power of minus 2, so x value is 4. This is numerical type question. Again, gaseous state, states of matter. 2 questions from states of matter. Interesting. According to Lewis concept, H2O acts as amphoteric substance. No, this is wrong. H2O, according to Lewis concept, it is a lone pair donor.
लोन पेयर डोनर्स आर ओनली बेसिस, सो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. H2O acts as an acid on reaction with ammonia and base reacts with H2S. This is true. Okay, now this is Bronsted theory. According to Bronsted theory, it can donate protons, it can accept protons. So statement 2 is correct. Statement 1 is false. ये एसिड्स एंड बेसिस का हो गया. एसिड्स एंड बेसिस से भी दो क्वेश्चन मुझे लगता है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे. ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. दिस आल्सो फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस. Okay, 2 questions from 2 to single chapter. Not maintain the neutrality. Okay, according to Lewis concept, water as base. Okay, now that is the previous question. Solution: calculate the Bi2S3. Bi2S3 is A2B3 type of salt. When A2B3 type of salt is there, Ksp is equal to 108 s to the power of 5. Overall value if you want, or only B and S you are taking 2s to the power of 2, 3s to the power of 3. By solving this, you will get this one. ये आपके क्लास में बहुत बार करा दिया क्वेश्चन है. ओके, रिपोर्ट योर आंसर एज x in 10 to the power of minus 15, so that x will become 1. 10 to the power of minus 15 will be same. 1.08 दिए तो भी आपको पता होना चाहिए कि दिस विल बी इजी. ओके, दिस यू कैन सी 1.08 10 to the power of minus 73 can be written as 108 into 10 to the power of minus 75. Ksp is equal to, okay, is equal to 108 s to the power of 5. 108 cancel. So S is equals to 10 to the power of minus 15. हो गया. ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है. इजी है, इजी. डोंट से दिस इज टफ, इट इज इजी क्वेश्चन. कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ये भी इजी है, आपके क्लास में बहुत बार करा दिया होगा सर आपका. ये दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज, दीज आर जीरो डाइपोल मोमेंट्स. ओके, एंड H2O का डाइपोल मोमेंट होता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट होता है, HCl का डाइपोल मोमेंट होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स. दे हैव लोन पेयर्स, दे हैव नॉट ए प्रॉपर स्ट्रक्चर, सो दे हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट्स. BF2, BF3 and CCl4 जीरो डाइपोल मोमेंट्स. सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. आई कंसिडर दिस एज इजी क्वेश्चन ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव minimum magnetic momentum. Magnetic momentum depends only on number of electrons. Just see number of unpaired electrons. किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम है ज़्यादा है, आप देख लो, बस हो गया आंसर. Cr+2, V+2, Fe+2, Na+2, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो. Cr+2 is 3d4, V+2 is 3d3, Fe+2 is 3d6, Na+2 is 3d8. So minimum number of electrons you can notice in case of nickel. सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन. आपको 21 से लेकर 30 तक यू नीड टू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन इट इज ईजी. एंड रिमेंबर वन मोर लाइन, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4s1 3d5. सो आपको पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना पड़ेगा. ओके, डोंट रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फ्रॉम 3d. पहले आप 4s से निकाल दो, देन यू गो विथ 3d. आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम. सेम, ये भी सही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे अमोनिया इज ए बॉर्डर टाइप ऑफ लिगैंड, whereas cyanide is a strong ligand. Ammonia also you can consider strong only in case of cobalt complex, and this is a weak field ligand. So weak field है तो unpaired electrons ज़्यादा होगा, so it can you can expect more magnetic momentum. Then it has no unpaired electrons, zero unpaired electrons, it has one unpaired electron. This is based on their atomic numbers and oxidation states. Not a tough question, you can say moderate question. Complex compounds. The correct order of electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन gain enthalpy क्लोरीन फ्लोरीन का दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत हो गया. ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस मे बी राइट, दिस मे बी राइट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एंड देन पोलोनियम इट कैनॉट बी मोर. ओके ना, द टोटल पीरियोडिक टेबल क्लोरीन इज हाईएस्ट, सो ये भी गलत हो गया. सो दिस इज योर राइट आंसर. Simple, very easy question of periodic table, or you can say group 16 also. Group 16 or periodic table, you can take this chapter. This can be considered from both elements. No need of remembering these values. Okay, कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यूज याद रखने के. PCl5 जब वाटर से मिलता है तो POCl3 बनता है. And when this POCl3 is treated, it forms H3PO4, P double bond O, 3 OH groups रहेगा. So it is a tribasic acid. The question is find the maximum number of ionizable hydrogens. 1, 2, 3.
Lead nitrate on decompose like this. So this A is NO2. And NO2 on dimerization means NO2 will be like this. It will be having one unpaired electron. It looks like this. And when one more NO2 comes, it will become like this. So there is no NON. Bridging oxygen एक भी नहीं रहता यहाँ पे. So the answer is 0. अच्छा क्वेश्चन है. This is a very good question. Because lead nitrate heating is the NO2, NO2 का dimerization. दो तीन concept मिला दिया है. Okay, this is a good question. In electro refining of blister copper, precious metals are obtained in anode mud. Pure copper is obtained above method. This is again metallurgy question. Metallurgy के statements में आपको मिल जाएगा. इसमें कुछ भी confusion नहीं है. सीधा सीधा you can remember this one from metallurgy concept, separation of metals, isolation of metals. Both statements are correct. Dettol is formed from two compounds A and B, A having 6 pi electrons, so that is coming from chloroxylenol, and B contains 2 pi electrons, that is coming from terpenoid. So he is asking terpenoid. So this is 100% memory based question. You should know what are the compounds from which you are getting Dettol. Completely memory based. Chemistry in everyday life. How many monomeric units of Novolac are there in 963 grams of polymer? Okay, so first of all, you should know what is Novolac. So monomer of Novolac is one OH group is there on the benzene, that is phenol. Then CH2S, you can say this is benzyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol. So in this compound, the molecular mass is 124. When this undergoes polymerization, it loses one water molecule. So minus 18 is equal to 106. He mentioned he got the polymer molecular mass as 963 and each molecule mass is 106. So how many it will become? 9. Okay, very simple. 963 grams of polymer you got. Each unit mass is 106, actually 124, but loses water molecule, so it is 106. So approximate value you will get. Otherwise you can go with this formula. No need of formula, just simply you remember given mass by monomer mass is number of units. Here this is interesting. When this compound is treated with Br2CH3OH, the major product is. Here it forms cyclic bromonium ion. You know about this very well. And bromine. So after this, if it goes like this, then plus charge may be here stabilized by this. Okay, it won't form any complete plus charge, but it is much better stabilized because of the oxygen lone pair. So you can expect this product. OCH3 will be by the side of oxygen. How many compounds will give biuret test? Completely memory based. Okay, now you need to remember the structures and all. So tripeptide, only species with peptide bonds gives biuret test. Memory. ये again this is match the column. Surface chemistry आप देखे होंगे तो this there is a table about this. Direct question है. Easy भी है. I think most of you remember this one. Pepsin from stomach, diastase malt, urease soybean, zymase yeast. Direct question है. इसके लिए ज़्यादा discussion भी ज़रूरत नहीं. And you want to get this compound from methyl benzoate. The methyl benzoate will be like this. C double bond O, OCH3 is methyl benzoate. So जब आप MgCl लेंगे तो this part will be attached here and this is out. After first molecule you will be getting C double bond O, A benzene मिल जाएगा. One more time you take phenyl magnesium chloride. This will be attacking here and this turns into your product. ये आपका product आ जाएगा. So the first compound is bromobenzene or chlorobenzene. Here option में bromobenzene है. First magnesium के साथ में treat करेंगे तो this becomes Grignard reagent and Grignard reagent with esters will give you tertiary alcohols. Very good question this is. Good question. Not tough but good question. Water with BOD value greater than 17 is highly polluted. Right statement. The oxygen required to decompose biodegradable and non-biodegradable impurities is called BOD. ये दोनों भी सही statements है. आपको याद रखना ही पड़ेगा environmental chemistry. ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वही याद रखो, बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. द ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ ए प्रोटीन इज 0.3%. मीन्स 100 ग्राम अगर लेंगे तो उसमें 0.3 है. एंड ई इज सेइंग दैट व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन. ओके ना, 0.3 is present in 100 gram.
and minimum means at least 175 grams if it is present. 75 into 100 by 0.3, ये पॉइंट निकाल दो, 0 आ जाएगा. 3 1 जा 3, 25 जा 25,000. ओके, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है. If 0.3 is present in 100 grams, 75 present in how much? 75 into 100 by 0.3. What is which of the following will not form acetophenone? ये देखो आप, इससे पहले जस्ट नाउ वी वर डिस्कसिंग, ये आल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड, वो पहले एक मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा. 2 सेकंड कर दिए तो ये आपका हो जाएगा CH3. It will be giving you a tertiary alcohol. And the question is, will not form acetophenone. It won't form acetophenone. It is giving you tertiary alcohol because Grignard reagent with aldehydes, they will be giving you continuously alcohols. Okay, this is 1 second. Sorry. If this is methyl, no, sorry. If this is methyl like this, okay, because already methyl group is there and already hydrogen is there. No. 1 second. Sorry. 1 second. ये जो भी मैं लिखा था सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे आल्डिहाइड दिया है. सो लेट मी गो विद आल्डिहाइड. ये 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, मिथाइल ग्रुप इज अटैकिंग हियर. करेक्ट, आई वाज टेकिंग हियर मिथाइल, डोंट वरी. वो भी रिएक्शन आपको मिल जाएगा. ये COH, AH, ये CH3. दिस इज योर प्रोडक्ट. ओके, एंड इतना ही दिया है, उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया. अगर PCC देता तो ये बन जाता था. इफ PCC इज गिवन, दिस विल बिकम C डबल बॉन्ड O CH3. अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी PCC नहीं दिया तो यही आपका आंसर तो वही है, नो डाउट इन दैट वन. आई वाज थिंकिंग दैट दिस इज मिथाइल. सो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा बिकॉज ऑल्डिहाइड्स विथ, एंड यहाँ पे 2 CH3 MgBr की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही MgBr होता है. और सेकेंड MgBr लेंगे तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर. इफ़ यू टेक CH3 MgBr, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन एक्चुअली. अल्कोहल्स में जो भी H है इसके साथ मिलके ये मीथेन बन जाएगा. दिस कैन गिव यू मीथेन बिकॉज acidic hydrogens with Grignard reagent will give you alkanes. That's a wonderful question. Which of the following secondary amine will not form enamine? Enamine बनाने के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है. You need alpha hydrogens. Here alpha hydrogens are not there. C double bond O, C 1 2 3 methyls. This is tertiary butyl. जब अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है तो there is no enamine, there is no tautomerism. Tautomerism की चांस ही नहीं है. So this is your answer. इतना ही देखना है आपको, only thing. And coming to हो गया बस 26. थैंक यू रेजिडेंस टीम वंस अगेन, थैंक यू सर्स. एंड दूसरे वीडियो के साथ में मिलेंगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्यू लाइन्स इन हिंदी आल्सो एज यू पीपल वर रिक्वेस्टिंग. चलो, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट प्लीज शेयर विद देम. डन.